Now, again, this a slight insight into this. Again, this diagram. So, you know how important is this diagram? Make this. So you have a human being which has ovaries. This is 2x. This is testis. 2x. Now this x 23 chromosomes, 23 now again 23 pairs. Now mitosis and embryo forms, and after embryo fetus forms, and you have to remember it ZEF. F is after 8 weeks. Zygote is just formed. Okay, zygote means just formed, and fetus is after 8 weeks. Okay. Fertilization, the fusion of a sperm with an ovum to form a zygote. ठीक है, during sexual reproduction is called fertilization. This is the definition of fertilization, and this slide is for learning. Understanding you have already done enough. Zygote grows and develops to form a new baby. The unborn baby in the uterus in the early stages, ZEF. Early stage is embryo, EE. The unborn baby in the uterus in the later stages of the development, where body parts are well developed in 9. We always say after 8 weeks, the embryo is only called a fetus. Okay? Now the process of sexual reproduction. The male parent produces male gametes called sperms. Male parent, sperms. Sperm is a small cell with long tail for movement. Female parent produces female gametes called ova. So this is male parent produces sperm. Female produces ova. Fertilization of an ovum by a sperm to form a zygote. ये दोनों मिलेंगे, ये मेल फीमेल के पास आता है तो बनेगा ज़ाइगोट. आपने देखा था ना उस समय हम जब पॉलिनेशन कर रहे थे तो भी यही था कि पॉलन ग्रेन्स फीमेल के पास आ रहे हैं, राइट. द zygote then divides again and again to form a large number of cells. The zygote grows and develops into, तो वो ZEF, zygote, embryo और fetus. ये अभी ना इसके डिफरेंसेस भी एक बार आएंगे आपके लिए, लेकिन ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ही एडवांटेजेस. ऐसा नहीं है कि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स आता है इन द ऑफस्प्रिंग्स बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक वेरिएशन. ये जो डाइवर्सिटी है, ये वेरिएशन है, इसकी वजह से एवोल्यूशन होता है. यही सेम पॉइंट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी आएगा. ठीक है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी से वेरिएशन होता है, वेरिएशन से एवोल्यूशन होता है, टू फॉर्म बेटर एंड स्टिल बेटर ऑर्गेनिजम्स, अच्छे ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशीज. वेरिएशन ऐसा हो कि बेटर एंड बेटर होते जाए. ओके. और दूसरा कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड एवोल्यूशन, वेरिएशन के बाद एवोल्यूशन, ये दो मेन